Okay, Assalamu alaikum all. This is the last session of the course where we will be covering the new content. There will be tutorial on Friday where the TAs will be solving some waveguide related problems. So continuing on the last class, we were discussing this parallel plate waveguide. And just reminding you that in this parallel plate waveguide, we have these two conducting plates, and along the dimension, along this transverse dimension, you have a standing wave, and along the guide direction, this wave is propagating. That's what we looked over last time mathematically, और उसके ऊपर हमने कुछ animation भी देखी थी. This is another view of these things, and obviously these are electric fields. They're being shown by these arrows here, and ek, let's and if we have TE, this is TE1 where m is equal to 1. I will go back to the equation which I wrote last time, so you may recall that we have an m there, and if we have m is equal to 2, we will have these two humps. It should come. Okay, so there was a frequency mistake, so I'm gonna change the frequency. Okay, so it should appear now. So okay, this animation is stuck by somehow, never mind. Okay, let's see. Okay, this is stuck, so never mind. So I'm going to show you another, and okay, yeah, it's here. You can see this is TE2 mode where you have the two humps when m is equal to 2, and when m is equal to 3, you will have more and more humps, and same would be for TM modes. I'm going to show you another animation, which is actually this one. So this one is basically made by me many years ago, where I'm actually coding Maxwell's equations numerically for a dielectric waveguide. So what waveguide nazar nahi aa rahi, lekin there is a structure here on this, and you see what was going to happen here. You can see these are the traveling waves which are going, and I am sampling a point at z is equal to 20 microns, and you can see, this is a standing wave, and this is the traveling wave which is going in the z direction. This is standing wave in the x direction where electric field is y directed, its polarization is y directed. So you can imagine, again, you can imagine that okay, let me actually so you can imagine that there are two parallel plates here at the top and bottom, and this hump is traveling in the guide direction. So that's the intuition. और इस hump को आप ऐसे भी सोच सकते हो, it's like a two-dimensional mountain, जिसका एक हिस्सा stuck है दो waveguide की प्लेट से, और दूसरा जो हिस्सा है that's kind of a traveling. You can also think in that way. So let me show you another animation on this, and then I'll go back to the mathematics so that things should make complete sense to you. So this is one. So let me show you. Okay, so here we go. This one. So you can see this is the TE2 mode where m is equal to 2. You can see these standing waves. ये नजर आ रही है ना आपको animation, right? The new animation which is yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So this which says these two humps, you can basically humps क्या हैं? इस ये मेरा arrow white देखो, और से इसका cross section है in this direction. You can see, अगर मैं ये देखूंगा, ये maximum, and that's how this hump would appear, cross section along this direction. ठीक है? So, और obviously it's power density है, तो electric field square है यहाँ पे, जिसकी वजह से negative portion आपको नजर नहीं आ रहा. So that's the whole
picture one can imagine in your mind. The standing waves hain along the transverse axis or along the z-axis, along the guide direction, waves are propagating. ठीक हो गया? So let's come back to our mathematics which we were doing. So and let's interpret it further. So have all these pictures in your mind, and we go on. So yeah, you can see my math right now, right? Yes. Yes, sir. Okay, good. So remember, we started our discussion that in the last class that we have this conducting plate and there's an oblique incidence, and we wrote all these fields for the TE field. Pay special attention to this one. You know, there is a sine theta I along the z-axis. And once because this perfect conductor, there won't be any transmission. So in this region, you will have the field, which is sum of the two incident and reflected fields. And once we look over that, you can once we looked over that, you can clearly see that this portion, remember, kabhi bhi aapko ye mathematical expression nazar aaye, this is representing a plane wave propagating in the z direction, this phase term. And this guy is representing the standing wave along the x dimension. And this electric field is y directed. इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन की थी इसकी विजुअलाइजेशन के ऊपर in the last classes. And similarly, h would be this, and the pointing vector, where is useful power, is obviously propagating in the z direction, and we looked over that last time. अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि इसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, अदर देन दिस टर्म के अंदर इतना इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, बिकॉज वी नो दिस इज जी ट्रैवलिंग वेव, जी डायमेंशन में वेव ट्रेवल कर रही है. ओके, दैट्स गुड. Importantly, this is a very interesting part which actually dictates the whole waveguide thing. And we looked over this term, that okay, that electric field would be zero whenever this sinusoidal term will be zero. And for this that to be zero, this condition needs to be met. We looked over that last time. Or xm, which is basically this x dimension, remember coordinates हैं, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यू विल हैव द वेवगाइड ऑपरेशन will be happening, or basically in points के ऊपर you will have all those nodes, और वो सारी discussion जो हमने की थी last time. So going back to this expression again, and let's have a more discussion over it. So I'm gonna so x let's say that and yes, and we discussed the intuition of this incident angle too, that the source, which is basically energizing this waveguide, will have a range of angles, and one of the angle will be trapped corresponding to this xm. So bottom line ये है, जो bottom line है वो कि this equation needs to be satisfied for a waveguide operation. और ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, लेकिन it has a wealth of information. So let's look over this equation in more details. So we had, I'm going to write it here again, इसके ऊपर दोबारा हम अपनी discussion continue करते हैं. So we had this xm is equal to m pi over beta cos theta I, ये जो हमारी इक्वेशन वहां से स्टैंडिंग वेव में ट्रू होनी जरूरी है. From here I can say this thing, you know, इसको हमने transform किया था different ways में. One of them was m lambda over 2 cos theta I. ये बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा, वहां से ट्रांसफॉर्म हुआ. फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से एम वी ओवर 2 cos थीटा आई पे ट्रांसफॉर्म हुआ था. और फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन टू 1 म्यू एप्सिलॉन cos थीटा आई. ठीक है, दैट इज दिस. और ये xm क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है, जनरली स्पीकिंग. So in other words, if I write this thing, cos theta I m over 2a
mu epsilon. As a reminder, ये मेरी वेवगाइड है, that parallel plate वेवगाइड, ये A है और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो mu epsilon है, ठीक है, और m is that integer. अब you can see this thing. If this condition needs to be met for a specific waveguide material, अगर mu और epsilon fix है तो, और अगर हम a को भी फिक्स कर दें तो किसी खास थीटा i के लिए the energy will be trapped for a given m, ठीक है. So that's something mathematically pretty obvious. And oh, I missed here. What I missed? F miss कर दिया मैंने इधर. So F was here, the frequency. So 2F frequency was here, 2FA. ठीक है. And the first given source frequency, this condition needs to be met. अगर मैं A को change करूंगा, अगर बाकी चीजें फिक्स हैं तो थीटा I will change. और अगर मैं एप्सिलॉन को change करूंगा, you know, material, for example, एक waveguide air है, उसके अंदर मैंने गैस डाल दी है, so this angle will change. और अगर मैं एंगल को फिक्स रखता हूं तो maybe m will change, and so on and so forth. The point is that this equation needs to be respected at all times. अच्छा, अब इस equation को थोड़ा सा मजीद देखते हैं. अगर मैं आपसे ये कहूं, you know, इस equation के ऊपर ये cos theta I, मुझे पता है इस बात का क्या that this guy cannot be greater than 1. It has to be equal to or less than 1. So which means that if, और ये बड़ा mathematical step है and very बड़ा खूबसूरत किस्म के steps हैं जो I'm gonna go do that now. If 2FA mu epsilon is greater than m, this implies, प्लीज वो वन वाली बात रिपीट कर देंगे? तो ये देखो cos theta I है ना, cos theta I क्या होता है, ये ग्राफ होता है cos जी theta I. ठीक है आगे समझ सकते. This cannot be more than -1 to 1. So 1. So in other words, if 2FA, which means that cos theta I will be less than 1. Perfectly fine, normal, कोई problem नहीं है. अच्छा, अब आपको याद होगा जब हमने TIR डिस्कस किया था, एवेनेसेंट फील्ड डिस्कस किया था, हमारी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी प्रोपिगेशन के अंदर sin theta I मौजूद है. So this is, pay special attention to that. Sin theta I needs to be, you know, real here. Otherwise the wave will not be propagating. अगर cos theta I less than 1 है तो sin theta I क्या होगा? We know that from trigonometry. 1 minus cos square theta I. Happily it will stay as real और हमारी वेव बड़े आराम से प्रोपिगेट करती रहेगी, ठीक है. साइन थीटा आई विल स्टे एज अ रियल एंड ग्रेटर देन 0. लेकिन however, you know, it is fully possible, और आपको नजर आ रहा है मैथमेटिकली पॉसिबल है. लेट्स से मैं m is equal to 1 कर देता हूं. You can see that I can pick a frequency, waveguide separation and epsilon combination in such a way that 2FA mu epsilon becomes less than m. It is fully possible, right? किसी को कोई इस पे इतराज नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल चीज है. m is an integer, m could be anything. If this is less than 1, it means that cos theta I becomes greater than 1, which means that sin theta I becomes imaginary. और अगर sin theta I becomes imaginary, so look over this equation. If this becomes imaginary, कौन मुझे बताएगा क्या होगा? अगर ये imaginary हो जाए तो इस जो propagating electric field है इसके साथ क्या होगा? If this becomes, let's say, J alpha, so what would happen? This J alpha multiplied with this J, and it becomes, this phase term vanishes, and the only thing left is attenuation. That's it. So there won't be any propagating wave. The energy would die right away. There won't be any propagation in the waveguide. यानी कि आप अगर उसके अंदर wave को फेंकोगे वो right away attenuate हो जाएगी और कुछ भी आगे नहीं जाएगा. It will attenuate rapidly if this is the true. And you can see this can be true for a
particular m. तो आपको नजर आ रहा है there are two regimes. There is a regime where you have a propagation and there is a regime where you will not have a propagation. So which means कि जो propagation जो threshold point है जहां पर हम दो regimes के middle में खड़े हैं that is equal to m. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ from here I can write cut off frequency for a mode m. You know, this is known as the, and don't worry अभी मैं इसको explain करता हूं cut off frequency for a mode m का क्या मतलब है, more intuitive. For a mode m is equal to m over 2f a cutoff frequency for a mode m would be 2fa mu epsilon. ठीक है, in other words, sorry इसको a को f को हटाना, in other words अगर frequency जो है if the frequency of the source is greater than the cutoff frequency, you will have the propagation. You will have the propagation for mode m. Mode m का मतलब ये है कि m is equal to 1 का मतलब है in this case TE1, या अगर हम TM डिस्कस कर रहे हैं उसका भी एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन निकलेगा, वो TM1 होगा. अगर m is equal to 2 है it means it is a TE2 mode या TM2 mode. Go if I show you back, if I show you this thing back, ये क्या है, TE2 मोड है. मैंने यहां पे M2 सेलेक्ट किया, ये 2 मोड्स है, 2 हम्स वाला मोड है. ठीक है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये चलना शुरू हो जाएगा. अगर मैं ये सोर्स फ्रीक्वेंसी कम कर दूं एज एन एनिमेशन, जो शायद ये बड़ी स्लो है, ऑलराइट, नेवर माइंड. So that is the meaning of this cutoff frequency. Okay, let me write it here explicitly. So a mode m will propagate only if its frequency is greater than the cutoff frequency. ठीक है, or we will call these modes as TEM in general, TEM mode depending on. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ और इन चीजों को थोड़ा सा मैं अंग्रेजी के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ ताकि सारी चीजें सेंस बन जाए. So you know this thing that in a parallel plate waveguide there will be a trapping of energy which will flow in a waveguide direction, और उसकी हैयत कैसी है कि वो एक स्टैंडिंग वेव है in this axis. अगर ये waveguide axis है, it would be a standing wave like this in this axis and it's traveling like this. और ये m is equal to 1 है और अगर m is equal to 2 है तो it will be like this. ये जो patterns मैं बना रहा हूं, we call them as the modes. Modes, technically these are solutions of Maxwell's equations for a given structure. और solutions of Maxwell's equation का मतलब है कि wave equation का solution है, ये एक खास wave है जो travel करती है और उसका structure ऐसा है. ठीक है, so अब वो जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, उसका मतलब ये है, एज एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से एक वेवगाइड है, उसका जो TE1 मोड है m is equal to 1 एंड उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज है. एज एन एग्जांपल, सोर्स के ऊपर मैं एंटेना लगाता हूं 2 गीगाहर्ट्ज का. इसका मतलब ये है जब 2 गीगाहर्ट्ज से मैं एनर्जी उस वेवगाइड के अंदर फेंकता हूं तो एनर्जी राइट अवे
electric field will right away attenuate. There won't be any propagation. I will not hear anything at the end of the waveguide because I am below that cutoff frequency. Okay? And if I change the source frequency to 4 gigahertz, then I can have that TE1 mode propagating happily. और ये तमाम चीज related है कि अगर frequency 3 gig अगर frequency was okay, so I think let me write it down. Am I making sense? Please मुझसे सवाल पूछें. I am looking, you know, if it's not making sense, do ask me question. So, okay, what I'm gonna do, let me have someone here. Oh, yeah. Yeah. So I am seeing some strange names here. Alice Parker, Ampere, Charles Coulomb, Edith Clark, wow, Einstein, Costa, wow, Zabardast. So, okay, I will go with Ibn al-Hasham. Ibn al-Hasham, do you want to be interactive with me? Ibn al-Hasham, are you sleeping? Yes, sir. ये कौन है Ibn al-Hasham वैसे, by the way? Sir Ramesh. Ramesh, okay. All right. So, you know, Ibn al-Hasham is the father of optics. Do you know that? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. अभी Okay. research किया. So let's be interactive here a little bit. So मेरे साथ रामेश आपने रहना है साथ. ये मेरी and you need to respond me yes and no so that I know somebody is being with me. So I have this waveguide, right? Parallel plate waveguide. और यहाँ पर एक source है antenna which जिसकी हम frequency को adjust कर सकते हैं. You know, there is a dial here and we can adjust the frequency. और let's say इस waveguide के अंदर m is equal to 1 mode की cutoff frequency FC1 is, let's say, 5 gigahertz. ठीक है? By the way, can you see this thing? What would be the cutoff? अगर mode 1 की frequency 5 gigahertz है, what would be the cutoff frequency for the m is equal to 2? It would be more or less than the m is equal to 1. Yes, Ramesh? ज़्यादा होगी ना? ज़्यादा होगी. क्योंकि directly proportional है. बिल्कुल. So in other words, जो 1 mode है, उसकी सबसे lowest cutoff frequency होगी. ठीक है? For both TE1 and TM1 mode, both will have the lowest cutoff frequencies and all will have more and more. ठीक है? So अगर let's say cutoff frequency for the mode 1 is 5 gigahertz और यहाँ पर मेरा और इस frequency का मतलब ये है कि उस वो जो electromagnetic wave अंदर travel कर रही है उसकी frequency ये है. ठीक है? So in other words, अगर मैं यहाँ पर source frequency 1 gigahertz रखता हूँ और यहाँ पर रामेश आप खड़े हो, हमने यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक फोन का चैनल बनाया है. You know, I am here. You know, let me. Okay, मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है. रामेश, do you wear glasses? कभी-कभी. चलो तुम्हारी glasses ये मैं बनाया अपने आप को. ओह, बड़ा अजीब सा. All right, and this is you. All right. I'm assuming तुम मेरे से तो पतले हो शायद. Yes, sir. Are you like this right now? Or this or this? नहीं, left वाला. Okay, you're like this. Never mind. So this is you. Okay, and we're talking with each other on a phone through this waveguide. Okay, no, I'm a happy face. All right, you are not happy face. I'm not sure why. Never mind. So अब मैंने यहाँ पर बोला हूँ phone के ऊपर and I have 1 gigahertz frequency and I'm using this waveguide. I'm replacing the tar with this waveguide. Okay. So 1 gigahertz पे जो मैं यहाँ पे phone पे बोला हूँ ना, उसने 1 gigahertz पे मेरी energy travel की है. Communications लिया है ना, समझो 1 gigahertz की modulation हो रही है इसके ऊपर. इतना पढ़ लिया होगा ना आप लोगों ने communication में, रामेश, yes, right? sir. So yes, 1 gigahertz के ऊपर ये wave इधर गई है. तो क्या आपको यहाँ पर कुछ नजर आएगा? कुछ सुनोगे आप अपने कान के ऊपर? क्योंकि मोड जो m के लिए है वो 5 है तो मेरे ख्याल से नहीं होगा. नहीं, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. हमने ये देख लिया है कि अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो वो साइन थीटा इमेजिनरी होगा और वेव हाईली अटेन्यूएटिंग होगी. करेक्ट? It would be highly attenuating. So you won't be hearing. So if I increase the frequency to 2, same will happen. All right.
But if I make it 6 gigahertz, then you will start hearing through which mode? TE1 mode या TM1 mode. इस तरह Yes. का hump होगा जो कि travel करेगा and will reach to you, right? Yes sir. अच्छा, अब अगर मैं frequency कर दूं, अच्छा अब एक सवाल है यहाँ पर, ये जो मोड ट्रेवल कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज है कि 5 गीगाहर्ट्ज है? अगर मेरा 5 होगी ना, क्यों क्योंकि 5? बाकी तो इमेजिनरी पार्ट होगा। नो, मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ अच्छा से ठीक, ऑन के ऊपर किस फ्रीक्वेंसी में वेव फेंकी है? 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। ठीक। यस सर। सो फिर यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज में कैसे ट्रेवल करेगा? वो बीच में नॉन लीनियर मीडियम तो है नहीं, इट्स ऑल लीनियर मीडियम। अच्छा सही है, सही है। 6 ही सेम चले। 6 होगा, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक नंबर है जिसको आपने मीट करना है। ये इस मोड की प्रोपेगेटिंग मोड की फ्रीक्वेंसी नहीं है। इट कैन बी प्रोपेगेटिंग मोड फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज हो, ओके दैट फाइन, यू नो इट वुड बी ऑलमोस्ट एट द बाउंड्री। लेकिन मोड की वही फ्रीक्वेंसी होगी जो कि सोर्स की है। ठीक हो गया? यस लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। What if I make the frequency, अच्छा आप बताओ FC2 की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 गीगाहर्ट्ज। 10 गीगाहर्ट्ज। What if I make the source frequency 11 गीगाहर्ट्ज? अब बताओ क्या अंदर ट्रेवल करेगा? तो मोड 2 में चला जाएगा। क्यों? मोड 1 को क्या होगा? वो नाराज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ओवरऑल तो हमारे पास सेट में जो 2 मोड्स आ जाएंगे ना इसमें। सो ये होगा एट 11 गीगाहर्ट्ज। जो मेरी बातचीत मैंने शुरू की है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी TE और TE2 के अंदर। अच्छा, बोथ ऑफ दीज मोड्स विल ट्रेवल। किस फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल करेंगे? yes 11 गीगाहर्ट्ज और 11 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 11 गीगाहर्ट्ज पे ट्रेवल करेंगे, लेकिन उनको अगर डिस्टिंग्विश करना हो, उनकी वेवलेंथ्स, अभी मैं आपको उसके रिलेशनशिप्स दूंगा, उनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट होंगी। अगर उनकी वेवलेंथ्स डिफरेंट होंगी तो उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होगी। आई एम गोना डू दैट, लेकिन उन फ्रीक्वेंसी उनकी सेम रहेगी बिकॉज़ इट्स नॉन लीनियर मीडियम, इट्स अ लीनियर मीडियम। करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब आप ये देखो, दिस इज नोन एज द मल्टी मोड ऑपरेशन। This is known as the multi-mode operation when you have more than one mode. Obviously here you have TM1 और TM2, ये सब modes चल रहे होंगे। TM1 और TM2 का structure थोड़ा सा different होगा, लेकिन they would be the same. So you have all those modes because this relationship in a parallel plate waveguide is true for both TE and TM. ठीक है? बोथ TE और TM मोड्स के लिए यही रिलेशनशिप है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर ए पैरेलल प्लेट वेवगाइड। ठीक हो गया रामेश? यस सर। ऑलराइट, सो अच्छा अब चेंज करते हैं। अब लेट मी, आई सॉ दैट मैरी क्यूरी, लेट मी हैव हर। आई एम अज्यूमिंग she Mary Curie is she, right? Okay, Mary Curie, who is this Mary Curie? Similar. मरियम। यू नो मैरियम क्यूरी की क्या एक खास बात थी मैरी क्यूरी की? यू नो दैट? Sir, she was a physicist and a chemist. नहीं, ओके, बट लाइक एक बड़ी खास डिस्टिंग्विश्ड उसका एक 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 उसका क्या कहना चाहिए, एक ओके, शी Radioactive. जी She was the kind of the pioneer of radioactivity. okay, yeah, but she is the only person, or you know, even a male or female both, she's the only person with 2 Nobel Prizes in the history of Yes, Nobel. one in physics and one in chemistry. So she's the only one with 2 Nobel Prizes. Yeah. So, you know, something to look forward to her. So you want to be her. Okay, that's good to know if you put the name. Okay, coming back. So coming back, now you need to be interactive with me. So, okay, कहाँ पर था मैं? Okay, all right, I lost my thought process, but never mind, I will pick it back. So when you have 2 modes, we call them multi-mode operation. You will ask the question, you know, Mariam or Mary, that
you know, what's the difference between single mode and multi mode? You know, agar मैं 6 gigahertz पे था, so I will have only one mode propagating, and that is known as the single mode operation. So what is the difference between the two? क्या और किसको हमें priority देनी चाहिए? Any thoughts from your end? Sir, multi-mode maybe. Multi mode, और वो क्यों आपने ऐसा कहा? Because the मतलब multiple frequencies can travel उसमें से. अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं जब बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर लेट्स से अगर मेरा डेटा है, यू नो, इट लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस है, ठीक है, फोरियर डोमेन के अंदर दिस विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स और वेवगाइड्स, इन दोनों को सपोर्ट करेगा in terms of waves. So what would happen if you recall that dispersion in the transmission line? आपकी two modes के अंदर energy split होने से your pulse will get distorted because both of them will travel at a different velocity. अच्छा, अगर imagine करें मरियम, so who's your friend, who's your best friend in the class here? You know, let's say, you know, कौन है आपका, and उसका मुझे नाम बताएं जरा. You know, maybe जो इन्होंने scientific name रखे हुए हैं. So Sir, here I can see Ampere. Ampere, okay. She's So a Ampere is your friend. friend. So let's say Mary and Ampere, that you are the two modes in the waveguide, and you both hold your hands together. ठीक है? वैसे by the way, who is Ampere? Sir, it's Asna. Asna, okay. So let's say Asna and Mariam, I'm sure one of you can run faster than the other, right? Who's faster, Mariam or Asna? कभी लगाई है रेस आपस में? Mariam will be faster. Okay, let's say अगर मैं आप दोनों को information split करके देता हूं, दोनों को आधी आधी, and I say them, दोनों ने अपनी full capacity पे भागना है, so Mariam will move forward than you. और क्या होगा, यहाँ पे रामेश अगर खड़ा है वापस फोन पे, तो उसके पास distorted information पहुंच जाएगी because information was split between the two modes. So that's the problem with the multi-mode behavior. So multi-modes are often undesirable. लेकिन अब होता ये, अब आप ये अगर गौर से देखो, अब ये बड़ी खूबसूरत मैथमेटिकल बात है. अगर लेट्स से मुझे ये बताओ, ओके मैरी, you tell me, all right, I want to keep my frequency at 11 gigahertz, 2FA mu epsilon. Lekin I'm not interested in this mode. What I do with the waveguide so that this mode should not propagate by looking over this equation? Can you tell me? Sir, we can use a single mode. कैसे? यानी कि ये मेरी frequency, तो मुझे पता है मेरी cutoff frequency is 10 gigahertz for the second mode. मेरा fx है 11 gigahertz, मेरा you know m is 2 for this one, mu epsilon fix है, तो क्या मैं कर सकता हूँ इसको? What I can do here to make sure that this mode is not propagating. अगर मेरी source frequency 11 gigahertz है, what I need to do, that I need to push this cutoff frequency away from 11 gigahertz, more than 11 gigahertz. वो मैं कैसे कर सकता हूँ? नजर आता है इस इक्वेशन से? किसको नजर आता है इस इक्वेशन से? क्या कर सकते हैं to push this, to increase this frequency more than 11 gigahertz? FC2 को who can tell me other than Mary or Ampere, if you want to take the chance? No? Faraday, Tesla, Thomas Edison? Sir, we can decrease A. Yeah, who's this? कौन है ये? Sir, Iman. नहीं, what's your name here? Still Iman or Tesla. something? No, Tesla. Tesla, okay. Yeah, okay. So yes, absolutely right. You can decrease A, यानी इस separation को कम कर दो, तो इसकी frequency, cutoff frequency बाहर निकल जाएगी. Yes, इसकी भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन you make sure कि वो 11 gigahertz के अंदर रहे, तो आपका single mode behavior हो जाएगा. So यहां से आप थोड़ा सा intuitively, सिर्फ इस इक्वेशन को ही हम देख रहे हैं, कोई नई साइंस नहीं कर रहे. आप देख सकते हैं जो पतली वेवगाइड होगी in dimension, that will be a single mode
वेवगाइड, और जो मोटी होती जाएगी, अगर मैं ए को बड़ा करता जाऊं तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज बहुत नजदीक आती जाएंगी, एंड आई विल हैव मेनी मोड्स. सो व्हाट हैपेंस इन ट्रेडिशनल, a waveguide which wants to carry a lot of power, like kilowatts of power, like these big dish antennas, they need kilowatts of power. Radar antennas jo hote hain, so they operate in multi modes, but all others you try to keep them in single mode. So multi-mode behavior is preferred when you want to have more and more powers. Okay, so that's the intuition of this equation on this. इसको आप थोड़ा सा इस तरह भी सोच सकते हो modes को, as I said that they are solutions to the Maxwell's equation, और आप इस तरह भी सोच सकते हो, जो मैंने last time एक example दे रहा था, that if you have a big sanitary pipe, let's say Mary is still with me. Okay, Mary, you have seen that big sanitary pipes lying around जो लगी ना हो लेकिन देखी है आपने? Yes, sir. जी जी. So can you walk through that pipe? Yes. All right. और अगर let's say आपके साथ Not walk, but maybe a crawl. चलो हाँ crawl कर लोगे, और आपके साथ let's say if I put my 4-year-old son too with you, both can easily crawl and walk, right? Yeah. अच्छा, अब अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका जो डायमेंशन है कम करना शुरू करूं तो आपके लिए वॉक करना मुश्किल हो जाएगा. मेरा जो 4 साल का बेटा है, he can still probably go around, right? Yes. और एक पॉइंट पे आप सीज हो जाओगी, आप कैप्चर हो जाओगी, you will not move forward. लेकिन my son will still, because he's 4 year and he will be leaner and smaller than you, he will still be able to walk, right? Yes. So that's the whole intuition, that how these modes, which are basically those electromagnetic waves, that can walk through these waveguides. ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? Okay, so if there are no more questions, let's move on and थोड़ा सा इसको मजीद थोड़े से mathematical relationships लिख लेते हैं मजीद उन्हीं equations की base के ऊपर. So if we go back to these equations which we wrote last time, I'm sure you have all those notes with you. So मैं इसको थोड़ा सा label कर देता हूँ अपनी equations को. So let me call this equation as 1, this as 2, and this as 3, and this as 4 HR, and this total E1 as 5, and total H1 as 6 number, and this one as this one as 7, and this one as 8. So by looking over any of these equations, from 1 to 5, you can see that this beta sine theta I is your basically guide propagation constant. So let's write that. उसको थोड़ा सा मजीद उसकी मजीद थोड़ी सी mathematical चीजें करते हैं, not fancy stuff, very obvious stuff. So I will say that beta guide in the z direction is beta sine theta I. और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, beta is a vector, right? General. इसकी ये जो waveguide direction में है, that is beta sine theta I, and this one is beta cos theta I. Why? मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये मेरा conducting plate था और ये मेरा theta I है, तो ये beta sine theta I in the guide direction यही बनता है. It's a vector. So beta theta, इसको I can quickly say that this is same as, you can write many things with this simple relationship like this, or you can say कि maybe velocity का कोई component है, जो velocity is also vector. You can say that you have the guide velocity. Same thing, same interpretation. And similarly, you can write the guide wavelength here. कैसे? 2 pi over beta zg, which is 2 pi over beta sine theta I is equal to, this would become lambda over sine theta I. Means के wavelength का एक component है.
So beta को आप transform कर सकते 2 pi over lambda and then you have that. So V over F sine theta I, or this is same as 1 over F mu epsilon sine theta I. ठीक है? So that's this one. इसी तरह आप transverse direction के अंदर बीटा x लिख सकते जो कि ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्स क्या है? आप उन इक्वेशंस को देखो. ट्रांसवर्स बीटा क्या है? बीटा cos थीटा नजर भी आ रहा है इक्वेशंस के ऊपर 1 to 6 if you go back. Very simple and very obvious stuff. ठीक है? ये in the transverse direction this is cos theta I और नजर भी आ रहा है ये in the standing wave it's बीटा cos theta I और वो सिंपल बीटा के वेक्टर को जब मैं रिजॉल्व करता हूँ तो ट्रांसफर डायरेक्शन में बीटा cos theta I है जैसे ये मैंने आपको दिखाया है. ठीक है? So beta transverse direction is beta cos theta I is equal to same as cos theta I is equal to W over V cos theta I is equal to W over transverse velocity. And similarly, on the same lines, you can write the transverse wavelength because on dimension में transverse wavelength would be different. उसी line के ऊपर, so it would be F mu epsilon cos theta I. All right. So I'm going to call these equations as 9, 10, 11, and 12. So these are the some simple equations. Now let's use these equations further. You know this thing that हमने ऊपर show किया है कि sin theta I is equal to show क्या किया आपको पता है trigonometry से cos squared theta I है. अब मैं क्या करने लगा हूं वो जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऊपर लिखे हैं ये वाले 1 to 6 equations जो हैं I will try to write them in the form of cutoff frequencies F and FCM ताकि more चीजें बड़ी illustrative सी हो जाएं. So that's I'm gonna do the one last thing before we call off and we'll stop there. So 1 minus cos squared theta I. Cos theta I is equal to m lambda over 2a. ये आपने ऊपर लिखा है रिलेशनशिप अपने नोट्स में चेक करो अभी लिखा है हमने. And this is same as 1 minus so यहां पर जो मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी थी FCM, चलो मैं लिखता हूं यहां पर दोबारा. So what I wrote FCM as m over 2a mu epsilon. So जो वेवलेंथ है कट ऑफ की वो क्या हो जाएगी? ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेलोसिटी है. So wavelength cutoff क्या है? 2a over m. All right, 1 over mu epsilon is velocity. So this is the cutoff wavelength 2a over m. So by using this relationship, I can easily, I'm skipping the algebra. It's very obvious actually. So since we have few more minutes, I'm not going to spend time in explaining. So this would become, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ये sin theta I को. ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि वो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वहां पर हम साइंस को इससे रिप्लेस कर सकते हैं. एंड दिस इज सेम एज इन द फ्रीक्वेंसी एफ सी ओवर एफ स्क्वायर साइन थीटा है. ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अब ये ज्यादा जनरल है कि यू नो ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ए मोड एंड यू नो इट्स सोर्स फ्रीक्वेंसी एंड यू कैन जनरली राइट ऑल दीज इक्वेशंस. ठीक है? Similarly, you can write. I'm going to share my handwritten notes for this parallel plate waveguide. So don't worry. I'm sure that it will make sense from those. So here it's important that you understand the whole dynamics. What I'm trying to do here. So beta z guide is equal to beta 1 minus lambda square. And by notes I mean not these ones, but what I have with me right now from where I am writing it. So this would become this, simply this beta z very easily. You can write that and you can write this guide to here. And similarly, you can write that. So what you can do, you can cast. And I'm not going to write all those expressions here since I will share all my notes.
you can cast E1 now in the form of FCM over F. इस फॉर्म में आप इसको कास्ट कर सकते हो बिकॉज बीटा Z को हमने इस फॉर्म में ले हैं एंड EM has that and similarly you can have that H12 and in the same way you can have those pointing vector 2. In fact, let me show you here just quickly. Let me pull up my no, not okay, we'll leave that. No. So, and one final thing over it is impedance of each mode. Impedance क्या होगी? TEM की this EY over HX इनका रेशो just like the transmission line. So ये आ जाती है eta lambda Z over lambda. ठीक है, और ये ईटा वही है जो आपकी फ्री स्पेस की म्यू और एप्सिलॉन होती है इम्पीडेंस. ठीक है, सो यू कैन आल्सो से दिस थिंग दैट दिस ईटा TEM is equal to eta over, we can easily transform that. मैंने इसकी इंट्यूशन पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, सो डोंट वरी अबाउट दीज रिलेशनशिप्स, ये वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Once you see my notes, which I'm going to post right away after this class, eta over 1 minus f square cm or f square इस फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, और अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, you can see this thing. It's very intuitive. अगर f जो है, if f is less than the cutoff frequency, you can see this eta TEM is not a real quantity. ठीक है, लेकिन for f is equal to FCM, it is an infinite, and after f increases FCM, then it becomes sense. So it means कि अगर मैं ये plot करूं eta versus frequency, you know, eta, so this is cutoff frequency. So at a cutoff frequency, it's infinite, and as the frequency increases, you know, it starts decreasing. This is eta TM, and eta TM m eta जो TM modes हैं parallel plate waveguide के, उनके सारे relationships exactly identical है, other than the impedance और like fields जो थोड़े से different हैं. उसकी जो impedance है, that is equal to 1 minus lambda square over lambda cm square. यहाँ पे multiply हो रही है, and same as the frequency. ये difference है इनमें और उन relationships में, जिसकी वजह से ये this is eta TEM. ठीक है, अच्छा. So अगर मैं थोड़ा सा इसको wrap up करूं, what we try to do here is जैसे ये जो eta है, this is exactly identical to that wave impedance which you wrote in the transmission lines or in that normal wave propagation जहां पर आपने वो सारी etas लिखी थी. अब ये waveguide के अंदर जो modes travel कर रहे हैं, ये उनकी wave impedance है. अगर TE1 mode होगा, उसकी impedance कुछ और होगी, TE2 mode होगा, उसकी impedance कुछ और होगी, and so on and so forth. Like this, and for the same as TM mode. अच्छा, अब एक if you see this thing, ठीक है, ये मेरी waveguide थी, and let's say ये मेरा angle है, ये अगर ऐसे hit कर रहा है, you know, this is my theta I. ठीक है, I want someone to be interactive with me here, so let's say Coulomb, Charles Coulomb. Do you want to be interacting with me, Charles? Is he? Yes, sir. ये कौन है Charles Coulomb? Sir, मैं हूँ जमशेद. Jamshed, okay. So Charles Coulomb. So you can see this thing. अगर theta is 0 कब होगा? जब मेरी incident कैसे होगी? Wave like this. ठीक है? So vertical. Vertical. अब जैसे and remember ये मेरा क्या कहते हैं, this is वो TE और TM सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं. जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा,
मेरा जो E और H जो ऑब्लिक थे वो थोड़े से सीधे होना शुरू हो जाएंगे. What would if my let's say अगर मैं जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बिल्कुल सीधी भी यहां, यानी मैं पूरी कोशिश करूंगा वो टकराए ना किसी वेव गाइड से, लेकिन बिल्कुल सीधी निकल जाए, उसका टीई ऐसा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा आया तो उसका एच कैसा होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, कोई ऑब्लिकनेस नहीं होगी उसमें. करेक्ट? यस सर. ठीक है. दिस इज दैट ट्रेडिशनल नॉर्मल इंसिडेंट काइंड ऑफ थिंग, एंड दिस इज नोन एज द TEM wave, transverse electromagnetic wave. ये वो वेव है जिसमें थीटाज ऑल और जीरो, और इसके सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो फ्री स्पेस में नॉर्मली प्रोपेगेट करते हैं. इन अदर वर्ड्स, ये इस इम्पिडेंस के अंदर ये जो ईटा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इम्पिडेंस ऑफ द TEM वेव, यानी कि जो एक नॉर्मल वेव होता है जिसमें दोनों प्रोपेगेट परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. सो दैट्स थिंग, and I think I should stop here. किसी का कोई question so far on this? I'm going to share my notes. एक problem कर लें या you sir. think we can leave this problem to the tutorial to make it more? Yes, बोलें. सर अस्सलाम वालेकुम सर. क्लास सर मैंने पूछा था, बस मैंने एंड पे लेक्चर एंड हो जाएगा, मैंने आज एक चीज पूछनी थी सर आपसे. तो अभी आप कह रहे थे कि एंड हो गया लेक्चर, अभी चल रहा है. अभी let's you have something to ask related to this content जो भी कवर किया? नहीं सर, इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर क्लास एंड हो जाए तो उसके बाद जरा वेट कर लें. लेकिन इसी क्लास में हो जाएंगे. वेट कर लें. Anybody has a question over this? So I think what I'm अगर मैं एक बिल्कुल आखिरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दूं इस सारे प्रोसेस के ऊपर, तो you need to have this picture in your mind. All right. So this picture in your mind, जो कि standing wave in the transverse direction है, and it's propagating in the z direction, and this is being dictated by that fundamental relationship जो हमने लिखा था, xm is equal to m lambda over 2 f cos theta है, और उस relationships के साथ खेल कूद के we figure out all those relationships which I just wrote here. So yeah, और आपको ये पता चल गया है, आई थिंक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे रिलेटेड हैं कि वो जो मैं जो डिस्कशन कर रहा था, सोर्स फ्रीक्वेंसी जो रामेश के साथ डिस्कशन की थी, वो बड़ी क्रूशल है टू अंडरस्टैंड कि सोर्स फ्रीक्वेंसी और मोड्स का आपस में क्या ताल्लुक है और किस तरह चीजें होंगी. ठीक है. So I think I will leave the problems to the tutorial because problem is happily अगर related to these what I have discussed. किसी का कोई सवाल on this? All right, if there are no more questions, I think this is the end of the content which I plan to cover for this course. ये थोड़ा सा waveguide का hastily आ गया, लेकिन I think you have all the intuition and physics behind it to understand जो मैंने कोशिश की है, और इसको मैं augment कर दूंगा अपने में. I'm gonna post my handwritten class notes for these parallel plate waveguide. I think usko dekhne ke baad things should make sense more than this messy thing.